आपसे पहले दिनेश जी ने ये माइक्रोस्कोप को हम कैसे ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं, बच्चों को कैसे सेल वगैरह दिखाते हैं, उसके बारे में बताया कि आज तो बिल्कुल रेलेवेंट हुआ है उनका मतलब। हाँ, क्लासरूम में हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज साइंटिफिक किट्स में सिंपल माइक्रोस्कोप्स हैं स्कूल्स में, तो उसको एटलीस्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं और बच्चों में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि देखो इसमें ऐसे। ओवर टू यू, लाइव हो गया ये। ओके, थैंक यू। So good morning participants once again. Am I audible to all of you? Yes, sir. Good morning. So hope again 41 participants are same whom I talked to yesterday. And as we discussed yesterday in our last discussion about the best approach or the different approaches which are available to handle practical exercises as well as the theory or the conceptual classes or the classes. So today also I am extending the same discussion, and as a part of this discussion again today, I would be discussing, I am extending the same again discussion to a level further. And today I am going to discuss about some of the again very basic again idea, and the basic idea is related to the inculcation of scientific temperament amongst students. So hope again the topic is interesting to and relevant to all of you, as well as again the level of or the school or the education level you are handling. So I need a stimulus from your side, as I requested you last time also. If you will not give me some stimulus, so I will not be able to proceed. So today I am going to discuss about the scientific temperament. And as a part of this again discussion, today I am going to again take up this So my screen is visible to all of you. Please inform me. Yeah. Yes. Okay, thank you very much. So as a part of this again workshop, I am going to take again a basic concept, that is the inculcation of the scientific temperament. And this is also related to the laboratory work, that is the laboratory activity. And after again this session, you will be able to again have some information about the science and the scientific methods. In addition to the basic knowledge about the scientific methods, we will also be taking or talking about some of the steps or the different steps which are required for a proper scientific method. And then the most important thing that we discussed last time also, that was the participative method, in which ultimately the skill of decision making is improved again up to a very good level. So after this exercise also, ultimately the students would be able to have a good decision making skill. So this is the again overall again expectation from the exercise or this workshop which we are going to again do or conduct today. So without again wasting much time, so first of all again talking about this, so I would like to shift on the one PPT so that we can have some idea about this activity. So as a part of this
again laboratory activity, which is dealing with the inculcation of the scientific temperament. Again, I am going to compare the entire laboratory activity with any game which you are aware of, because in our daily life or even from since our childhood, we are fond of again different games. So this laboratory activity, which we call scientific temperament, or the inculcation of the scientific temperament, or the development of scientific temper, can also be equated to any game. So as a part of this activity, first of all, what we are going to do, we are going to learn about playing a game. So here, because we are again comparing our development or the inculcation of the scientific temperament from any game which you again like, so you can compare it. So we are going to again just learn how to play a game. That is the aim, or that is the motto of this entire again exercise. So for example, you can have here now blank again screen. So on this blank screen, you can again you can assume of any game which you like the most. So may I know which game you like the most? Anyone? Good morning, sir. Sir, I usually like card games. Okay, card games, yeah. Anybody else? So somebody may be liking football, some may be liking cricket. So you can talk about any game. So if you take into consideration any game, so if I ask you, what is a game? For example, I have a picture. Can you name this game? Good morning, sir. This is look like football. Yes, very good. This is a football game. Yeah. So what is football, if I ask you? Or what is the aim of the football, basic aim? Aim of football game is मतलब बच्चे की physical strength development करना और टीम के साथ काम करना और एक target achieve करना. These are the outcomes. Very good. But what is the exact aim of the football or the game? Sir, we are talking used about? What we do exactly in this game? This is the main question. So we score goals, and it is used to amuse the person. It is done for recreation and amusement, along with inculcating physical fitness. So I think the point is to score goals, so that people learn about competition and teamwork. And it is used mainly, the outcome is so that people can get amused, and the people are physically fit and they learn about competition. Okay. So in parallel to this picture, again, I am having again another picture. Can you see this picture also? Yes, sir. Okay, here also we are playing a game also as a part of this picture also. This is nothing but a sort of exercise, and you can call it game. And the name of this game is, which we call it in our academic sense as science. So both are more or less same. So here with this again slide, I am going to again search. I am going to find out some similarities between any game and the activity which we call science. So first of all, if you talk about the football or the cricket, ultimately you will again be knowing that always a game is having some ultimate aim. Although you have told me, you have just described that ultimate
aim of any game is again the teamwork or to increase the stamina of the participants or the whatever players are playing. And so in addition to all these outcomes, you will find ultimately a game is having some motto also, which is the inbuilt motto. And through those mottos, ultimately, we achieve whatever, again, things you have described. For example, in case of the football, if you take into consideration this particular game, then in this game, what we do? In this game, ultimately, the players of the two team, they play, and they are playing the game with the aim or object to push a ball in other's court. And when a team pushes a ball in the other's court, so ultimately, as a result of that, again, activity, a point is gained by the team. So that is the ultimately aim of the overall game. So here we have defined what football means is. So if I ask you same thing, what we do in science? So can anybody tell me what exactly we do in science? Just like I have told you in football, our aim is to push the ball to in the court of our opponent, again, team. So what exactly we are doing in the, again, science activity or in the game which we have named as science? So we try to gain information, analyze the information in order to address a scientific question. Okay. Anybody else would like to add anything? To make the students curious about the things which are happening around us, to make them use their senses and ask the question, what is, if something is doing, the why it is happening. That is making them curious. Okay, good. Any other suggestion? Any other addition? Sir, it is a logical exploration of the natural phenomena or other phenomena which are going around us. So whatever you have said rightly. So what we are doing in a science or in the science activity, we are just studying anything in some orderly fashion. So as a part of this activity, just like the game we have described, football. So in football also we are having some ultimate, again, aim, some again objective is there. And similar to that objective, we are also having an objective of the science activity also. And as a part of that activity or as a part of the science activity, what we do, we try to solve some problem in some orderly, in some systematic manner. I hope all of you agree with me up to this extent. Yes, sir. So whatever you have said, I have just summarized it. It is nothing but the systematic study of anything that is done in an orderly fashion. Now, if you take into consideration both these things or both the activities which we are now at this time, we are searching or looking for the parallel things or the similarities, then what you will find that whether it is science or the football or any game which you would like to fit in this picture, then always you will find the game is always played. Any game you take into consideration, whether it is football or cards or kho-kho, anything, any activity, game activity, you will find always all those activities are based on some preset rules. You will not find any game where the rules are not fixed prior to playing a game or playing that activity or doing that activity. Can you cite any example where again such rules are not set beforehand? No, sir. So always you will find some set rules are there, and then the game is played, then that activity is performed as per those set rules.
So same thing happens in case of the science also. If you are doing, if you are planning, if you are aiming to do some systematic study in some orderly fashion, in some ordered way, then again you will be performing that activity as per some set criteria, as per some set rules, according to some set rules. So that set of the rules in case of the science is known as scientific method. So in case of the science, what we are doing, we are playing this science activity, or we are doing this science activity in the form of we are doing the systematic study of anything through scientific method. Now, what is the scientific method? This is the most important thing. Now, if you take into consideration the science, although we have again tried to find similarities between a game and the science activity, but in actual sense, if I again ask you, are they parallel? Although we have again found out a lot of similarities between the two activities, but in actual sense, are they considered again same? Means, do you find science as enjoyable, as full of joy as we enjoy any game? That is not the case. If the rules are set in a proper manner, then it can be the enjoyable for students. If the rules are simple, we create the environment, so it will be joyful for students. They will enjoy as they're enjoying any other game. You have said rightly, ma'am, but again, the rules are defined and we cannot change those rules. Only thing is we have to modify, we have to work under those rules. And what we can do maximum, that we can make our students more and more familiar with the rules, so that they can have the more information about the rules, so that they can play this activity in better way. They become better player. If you know the rules better about any game, you will be again a better player. So similarly, in case of the science also, unless you know these rules or the rules of the science, you will not be able to do your science properly. And nowadays, this science is very, very fascinating word. In our society, always we have tendency to link, to attach this science word to anything, whatever we come across or whatever things we come across, irrespective of knowing whether this is actual a science or not. But we are having the tendency to attach this word. If you want to make some word catchy or something catchy, so nowadays we observe, we see this pattern in our society, that you attach some science word to anything. So this is the fascination about the science in our society. And based on this trend, again, you will find a lot of things which are nothing to do with science, but the people or the society is making efforts to claim them as science. You may be knowing, you can cite, you can give me a number of examples. So those words, those terms which are again prevailing in our society, although they appear to be the science, but they are not actual science. We simply call them as pseudoscience, pseudosciences. And number of examples are there. For example, your numerology, although people may disagree with me, numerology, astrology. So all such type of things are pseudosciences. Even if you take into consideration your medicinal system, the system of the medicine which we follow, that is also a pseudoscience totally. For example, allopathy, homeopathy, Ayurveda also, all these are the pseudosciences.
And the reason for that is because although they are proper disciplines, proper streams, but the fundamentals of all these disciplines which I have described you, they are not based, they have not judged on the basis of the scientific methodology, or they do not fit in our scientific temperament. Do you agree with me or not? Yes. Yes, sir. For example, just because we are again giving some time to this again notion also, you take example of the numerology. Nowadays, numerology and astrology is very, very popular in our society, thanks to again this multimedia. So 24 hours we are in the front of some astrology or the numerologist, and he or she would be predicting our future. What is this numerology? In this numerology, what you have done, you have just randomly fixed or linked your numbers from 1 to 9 to some planet. Nobody has checked whether this linking is correct or not. And again, on the basis of just, again, without any checking, without any, again, systematic study, we have also linked the fate to those planets also. So is it scientific methodology? No, For sir. example, in numerology or in astrology, we say the Mars is related to the aggression. 2 number is associated with the moon. Moon sign is there, and because moon is white, and white color is always again gives the it is the indicator of the coolness. So that's why it is again affecting our life in that way. So is there any scientific study for this particular type of problem? Do we No, have sir, any scientific study related to this aspect? there's no rational behind it, sir. So this is not exactly science because there's no logic or rational behind it. So that's why I'm saying all such type of again disciplines which are we are having in our society, they are considered as the pseudoscience. I am not talking about the benefit, because if something is not scientific, you cannot say that we are not getting some benefit. For example, if you take into consideration our system of the medicine, for example, just now we are saying Ayurvedic sciences. So what is Ayurveda? In case of Ayurveda also, the basic notion of the Ayurveda is based on the Trigun, Kapha, Pitta and Vata. So do we have any scientific rationale logic about these two things? Are we able to prove? So we have in our society a number of such type of things which cannot be proved scientifically. So they are beyond the scope of logic or the rational thinking. Similarly, in case of allopathy also, the concept of the allopathy is again nothing to do with the that scientific temperament. Although we try to claim that allopathy is the again very advanced science, but that advancement not in the allopathy, but that is because of the advancement taking place in the modern science, modern medicine, that is other than allopathy. Although allopathy is claiming all those advancements to be the part of its own, that is not the case. So all these things we have to take into consideration if we want to popularize our science. Now, although science is very popular in our society, but if you take into consideration I'm sorry, today you must be again listening some voice, and some program is going on actually in our vicinity, some political because of the election. So please bear with me this disturbance. So
if you take into consideration this science activity from the student's points of view, then you will find science always creates a kind of fear amongst the students. And if you take into consideration again, overall again data, I'm talking about the global data, including India also. So the two disciplines or the two subjects are most again scaring. One is science and another is mathematics. And for this, because at this moment we are talking about the science, the contribution again in making this psychosis amongst the students, again that credit goes to we also. We means we teacher, science teachers particularly. We have created a notion that science is something beyond a common person. Means a common man, a common person of a common understanding cannot do science. It is something. हम अपनी डेली लाइफ में बच्चों को कह देते हैं, अरे तुम तो एवरेज हो, अरे बिलो एवरेज हो, तुम साइंस नहीं चला सकते. So because of this notion which we have created, हमने अपने आप को सुपीरियर करने की कोशिश में, अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हमने अपने सब्जेक्ट को इस तरह से शो करना शुरू कर दिया है कि बच्चों में उसके लिए एक साइकोसिस, एक फियर क्रिएट हो गया है. सो वी आर नाउ, इट इज आवर ड्यूटी टू रिमूव दैट फियर सो दैट स्टूडेंट्स, children can enjoy this subject also, and they can integrate this particular subject also just like any other subject. And in order to do that, again, we have to create an atmosphere so that the students can understand science in a better way and they can develop their scientific temperament. And this is only possible when, instead of talking about the science in terms of the biology or chemistry or physics or any other again branch of the science, rather than focusing on that, if you focus on the some common points of all these again disciplines of the science, and that common point is this scientific temperament or the scientific methodology. So my request to all of you is, because you are the again the founder teachers, I would say, because you are responsible for strengthening the foundation of the education. So rather than focusing on the science or the biology or the chemistry, first of all you focus on this scientific temperament or scientific methodology. Once you have developed this art in your student will start enjoying this science, and they will never again take this science as a challenge, but they will enjoy and they will try to find out the solutions because now they are familiar with the rules. The problem with us is that we are not exposing, we are not telling the students that what are the rules of the science, but we are saying you play. We are pushing them that you cannot play good game, you cannot do this activity in a better way. But we are not telling them that what are the rules, what rules you have to follow. So this thing can only be done only through training them, exposing them, enforcing them again and again, reinforcing them about these rules. So as a part of this activity today, again, I am going to again tell you about this research methodology or this research or the scientific temperament. And this is nothing, again, this is not very complicated thing. It is again simply a set of there is a series of the steps. And if you learn and if you can again make your students understand that these are the steps, and if you will follow these steps, you will be able to understand, you will be able to solve your scientific problems very easily and in better way. So what is this scientific temperament or the scientific method? This scientific method is made up of certain steps.
some steps are there. And these steps, if you take into consideration this picture or this again slide, then the first step of this scientific methodology or the scientific method starts with the step of observation. Now here you will find the dilemma. हम जब प्रैक्टिकल कराते हैं तो हम सबसे पहले फोकस किस पर करते हैं? Can anybody tell me? We start with the rule, what you have to do. Set of instructions will be given first. You have to do like this and this, that. So we introduce rules first. Yeah. Our set हम of रूल्स नहीं बताते मैं, हम सबसे पहले उसे बताते हैं भाई आपको क्या करना है. ठीक है, वो तो चलो बेसिक होता है, जब हमने बता दिया कि हम साइंस करने जा रहे हैं, so any problem. But always you will see that first of all we focus on the Objective, sir. Aim. The aim. एम तो हो गया. एम के बाद वी स्टार्ट अगेन फोकसिंग ऑन द मेनली ऑन द प्रोसीजर पार्ट, कि आपको क्या करना है. वी आर नॉट गिविंग एनी स्कोप ऑफ अगेन ऑब्जर्वेशन और एनी स्कोप ऑफ थिंकिंग. हम डायरेक्टली उनको बता रहे हैं, क्योंकि वी हैव बीन ट्रेन्ड इन अ अगेन डायरेक्टिव अगेन अप्रोच. तो हम उन्हें सिंपली बताते हैं भाई ये प्रॉब्लम है और देखो आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है. बट इन एक्चुअल साइंस दिस इज नॉट द स्टेप, इट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो whenever you are dealing any scientific problem or anything, if you want to study systematically, then the basic step and the most important step of any scientific again research, any scientific again investigation, any scientific inquiry is this observation. You will not, unless you will be making this observation, this step, you will not be able to reach on any conclusion. So our aim should be focused on this particular step. तो बच्चों को इधर उधर का चीजें बताने से पहले आप यदि सीधा इस पर लेके आए कि भाई आप चीज ऑब्जर्व कीजिए, बस छोड़ दीजिए बाकी सब चीज, आपको क्या दिख रहा है, then you will be able to guide them in better way if you want to develop scientific temperament amongst your students. Now what is this observation step? We know observations very well. As far as the definition of this observation is nothing but the perception. Our perception about the things going on in our surrounding. And this perception is gained through our senses, through our sense organs. And as you know, there are 5 sense organs, that is vision, smell, touch, taste, and hearing. So whatever stimulus we get through these sense organs, ultimately, when brain is able to perceive that stimulus, so that stimulus or the response of that again stimulus leads to a process, an activity, and we call that particular perception as observation. And this observation is the basic requirement of all living organisms, including human beings. We are continuously, if we are living, if you are alive, we are again, if I am alive, so I am always doing some observation, whether I am aware of it or I am not aware of it. Always I am doing. So observation is the basic thing which we keep on doing throughout. Again, I say 24 hours. If you are sleeping also, then also your sense organs are observing. Although our brain is not
registering those things, but observation is going on because sense organs are working continuously 24 hours, 24/7. And in our daily routine also, we do lot of observations. So if the observation we are doing in our day-to-day life also, so how do observations which we call scientific observations, they differ? That is the important thing. Now, in order to again define the scientific observations, let me again give you some overview of the functioning of the human mind. Do you know how human mind works? Anybody? I am talking in terms of the making observations. You must be having some clue. I am not saying you tell me exact functioning of the human mind. So as for we say human mind with observation, like you said, sir, we sense some stimulus by our sense organs, which then goes to our brain, where we try to process the information based on the observation we have, and we try to come up with some kind of hypothesis based on what we see. Okay, so this processing of the human or the information is very, very important from the, again, brain or the mind functioning point of view. Although we say that the human mind is the most complex organ or the invention of the mother nature. But if you take into the consideration the overall functioning or the processing or the method of the processing, how does this mind process information, you will find the methodology is very, very simple. और क्योंकि आप सारे के सारे जो टीचर्स हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, प्राइमरी पे करते हैं, या आपने अपने सभी के बच्चे भी होंगे, तो कभी आपने देखा है कि बच्चों का ब्रेन जो है कैसे काम करता है? खासतौर पे यदि बच्चा आपका छोटा है या आपके स्टूडेंट जो छोटे हैं, खासतौर पे वो टीचर जो प्राइमरी विंग को यदि डील करते हैं, उन्होंने देखा होगा बच्चे किस तरह से रीड करते हैं. जब आप बच्चे को पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अल्फाबेट पढ़ा देते हैं, या उनको जब रीडिंग स्किल्स आप उनमें अगेन जब आप उनको डेवलप करना चाहते हैं, तो बच्चा किस तरह पढ़ता है? मान लीजिए आपने बच्चे को बता दिया कि मदर की स्पेलिंग MOTHER है, और जब आप बच्चे को जो अभी फर्स्ट लेवल पे केजी में है, तो वो कैसे रीड करेगा? वो थोड़ा अटक के पढ़ता है, मतलब एक एक वर्ड को थोड़ा सा ना सोच के बोलता है, एकदम डायरेक्टली जैसे हम लोग बोलते हैं मदर के. सर रेपिटेशन के साथ आता है उन्हें, रेपिटेशन के साथ दे लर्न. ओके, व्हाट एल्स? Any other observation you have made? आप लोगों ने एक और किया होगा कि जैसे ही किसी बच्चे के सामने, जिसको ऑलरेडी हमने बता दिया कि मदर या फादर का जो लेटर है, जो पहला लेटर है वो M होता है, M से स्टार्ट मदर होता है, F से स्टार्ट फादर होता है, तो यदि बच्चा रीडिंग कर रहा होगा, तो जैसे ही उसके पास, उसके सामने कोई नया लेटर M से स्टार्ट आता है, तो वो सबसे पहले क्या बोलता है? वो उसको रीड नहीं करता, वो सबसे पहले जंप करके एकदम बोलेगा मदर, फादर. आखिर क्यों? सो वो M के साथ मदर को ही कनेक्ट करता है. For him, M, any word starts with M means it's mother, क्योंकि वो उससे ज्यादा जानता नहीं है. उसने इतना देखा है कि M देख के मदर ही आएगा. तो क्योंकि उसका जो ब्रेन है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, क्योंकि बच्चे के अंदर हमने अभी तक इतनी चीजें देखी नहीं है और वो बहुत बिल्कुल प्रिलिमिनरी लेवल पे काम कर रहा है, तो द चाइल्ड माइंड इज वेरी वेरी गुड ऑब्जेक्ट फॉर द स्टडिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड द साइकोलॉजी.
तो बच्चे का जो दिमाग है उसके अंदर क्योंकि जो डेटा है वो लिमिटेड डेटा है, तो जब हमारा ब्रेन जब इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, जो स्टिमुलस मिलता है, तो आफ्टर गेटिंग दैट स्टिमुलस, तो जो हमारा ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है उसमें सर्च करता है फॉर लुकिंग फॉर द पैटर्न, सम पैटर्न। तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो ब्रेन के अंदर जो है फंक्शनिंग, वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जैसे जैसे वो ढूंढता है कि कोई उससे सिमिलर वर्ड है तो उसको एकदम जैसे ही उसको मिलता है और वो वहां पर उसको फीड कर देता है। तो बच्चे के जैसे ही आपके दिमाग में बच्चे को आपने बता दिया कि मदर का जो लेटर है, जो स्पेलिंग है वो एम से स्टार्ट होती है, तो कोई भी यदि उसके सामने लेटर नया आता है जिसको उसने आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया, कभी याद नहीं किया, पढ़ा नहीं, तो जैसे ही एम से कोई लेटर आता है तो ऑटोमेटिकली ही रीड और ही और शी रीड इट एज मदर, क्योंकि ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिकली जंप कर जाता है। तो सेम थिंग हैपन्स इन आवर केस ऑल्सो, अनकॉन्शियसली, हमें पता नहीं चलता लेकिन ये होता है। कभी भी हम जो लेटर्स पढ़ते हैं, जैसे आपके सामने अभी ऑब्जर्वेशन वर्ड पढ़ा है, तो यदि आप इस फर्स्ट गो में यदि आप इस लेटर को पढ़ेंगे तो ऑलरेडी क्योंकि आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया, तो ब्रेन जो है वो कभी भी ऑब्जर्वेशन की सारी स्पेलिंग्स को एकदम नहीं पढ़ेगा। एज सुन एज वी नोटिस ओ बी और आखिर में एन आया, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन परसीव कर लेता है कि दैट दिस लेटर इज ऑब्जर्वेशन। तो बाकी का जो गैप है वो सारा का सारा जो है वो ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली फिल करता है, अनलेस यू विल बी फोकसिंग एंड रीफोकसिंग ऑन द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। और इसी के कारण हम रैपिडली पढ़ पाते हैं, रैपिडली डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग की मेमोरी में, अनकॉन्शियस में ऑलरेडी वो डेटा फीड अप है। तो ब्रेन हमेशा जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है, सबसे पहले दैट ब्रेन लुक्स फॉर द things which are already available. If things are not available, then he again shift back toward the original thing and then try to create or try to make some new picture. So when we do our day-to-day routine observations, we are making perceptions in this way. But when we are saying that we have to make scientific observation, then we have to overcome this limitation of the mind or the brain functioning or the human mind functioning or the working. And now instead of just jumping or observing things superficially, what we do, we now give some time, give enough time or the sufficient time, and then we observe the things in more again defined way, more detailed way, up to the again the minutest level. We try to again observe things. So when you are taking observation up to its again maximum again depth, then you get the every minute detail of the again object or the thing in which you are interested, and that is called as scientific observation. So when we are making a scientific observation, so as a part of that observation, what we are doing, we are just we are observing the thing up to its minutest level. और वो तभी पॉसिबल है जब हम चीज को बहुत डिटेल में बहुत बार बार देखेंगे. So as a part of this scientific methodology or the development of this skill, you have to train your students to look for observation. You focus, you again stress, you inspire them, you train them to focus on the things in which you are interested or they are interested, and to look again and again to make observations. Now, as far as these observations are concerned, again, because the majority of the observations are done with the help of, again, our sense organs.
So again, on the basis of that, you will find the observations may be of direct observations and they may be of indirect observations. So you can make direct observations also, and you can make indirect observations also. The direct observations are those which we are making through our senses directly. But some of the observations are made indirectly also. For example, the perception of the dark. Is it direct or indirect? Anyone? So it is direct, so if we cannot see something, we assume things, but the darkness is basically no light falling into the retina, so I would say that's direct. You can say it is direct, but ultimately it is related to light. Retina is sensitive to the light. It is not sensitive to dark. It is not sensitive to darkness. So it is indirect. Yes, sir. Similarly, if you are observing the temperature with the help of thermometer, so is it direct or the direct? It is direct, indirect. It is also indirect. So in this way, observations could be direct as well as indirect. And as far as the scientific, again, observations are concerned, again, in science, we always give the preference to those observations which are repeatable. If something is repeating again and again, that is having value. If some observation is not repeatable, then such type of observation has no value. तो आपने देखा होगा जितने भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी साइंटिफिक फिनोमिना हैं, वो सारे के सारे फिनोमिना दे आर बेस्ड ऑलवेज ऑन सम रिपीटेबल ऑब्जर्वेशंस. यदि कोई रिपीटेबिलिटी आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं किसी ऑब्जर्वेशन में, तो आपका ब्रेन कभी फोर्स ही नहीं होगा, उसको अगेन स्टोर ही नहीं कर पाएगा. वो एक बार देखेगा, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी के उसमें डालेगा, उसके बाद यदि उसका फिर से यूज नहीं होगा तो दैट अगेन इंफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट फॉरएवर. So in science also we have, again, we give importance to only those observations which are repeatable. And these repeatable, again, observations are important because when something is repeating again and again, then because of the inquisitiveness, because of the curiosity of the human mind tries to explain, try to search, try to come up with some pattern. And this pattern seeking ability of the mind is again because mind always try to explain or define things in the form of generalization. क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो कभी भी हर चीज को माइन्यूटली नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऐसे करेगा तो बिकॉज दिस ह्यूमन ब्रेन इज हैविंग अ फिजिकल एंटिटी and this physical entity is also having some limitations. और जो इंफॉर्मेशन है उसका तो पूरा का पूरा अगेन कोई लिमिट ही नहीं है. तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा जैसे आपकी एक मेमोरी होती है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है. वंस दैट कैपेसिटी इज फुल यू कैन नॉट स्टोर एनी इंफॉर्मेशन फर्दर. बट दैट इज नॉट द केस ऑफ द ह्यूमन माइंड. ह्यूमन माइंड में आप अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं. एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज नॉट keeping track of each and every minute detail. तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हमारे माइंड में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन that is stored in the form of some rules, formulas, and those formulas are in the form of, again, the which we call abstract information or generalized information.
तो जब ह्यूमन ब्रेन कोई भी चीज को देखता है, कोई पैटर्न को सर्च करता है, तो उस पैटर्न के बेस पे दैट माइंड ऑलवेज, और ह्यूमन माइंड ऑलवेज ट्राइज टू डू जर्नलाइजेशन, एंड दैट जर्नलाइजेशन ऑलवेज रिमेन्स। क्योंकि जर्नलाइज आपने चीजों को कर दिया, तो उसके बाद आपने पूरा का पूरा जो ग्रुप है, जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको आपने एक छोटे से बॉक्स में बना लिया, जिसको हम कहते हैं जर्नलाइजेशन। जैसे हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बना लेते हैं, तो सिमिलरली ह्यूमन माइंड आल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. So when a scientific method is developed, so this scientific methodology is nothing, that is the processing, that is the process of describing the things occurring in our surrounding in the form of that formula that we call the concept of journalization. तो आपको ये जर्नलाइजेशन का जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, जो मेथोडोलॉजी है, इसको आपको डेवलप कराना है बच्चे में, जिससे कि बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो सके. तो पहला जो स्टेप है इसका, वो है ऑब्जर्वेशन. तो सबसे ज्यादा यदि आप अपने बच्चों को ऑब्जर्वेशन पे फोकस कराएंगे, तो ही साइंटिफिक टेम्परामेंट आना स्टार्ट होगा बच्चे के अंदर डेवलप होना. तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप जो है, क्योंकि अभी तो यदि आप 8 तक पढ़ाते हैं, तो 8 और 9 तक तो साइंस को साइंस के में ही पढ़ाया जाता है, सारा का सारा क्लब किया हुआ होता है ना, हम उसको कहते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और द फिजिक्स. तो आपके पास यू आर हैविंग द राइट अगेन चॉइस. आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बच्चे के अंदर इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कर सकते हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग, through inculcation of this scientific methodology. तो अपने बच्चों को सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करना सिखाइए, साइंटिफिक वे में ऑब्जर्व करना सिखाइए. So once you have again observed a thing minutely, and if you are able to see, if you are able to pinpoint some repeatability, then comes the next step of the scientific methodology or the scientific temperament, and that we call again the describing of that repeatability. आपने जो repeatability ऑब्जर्व की है, उसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं. And this description is done in the form of certain questions. And we call that particular stage as question framing. क्योंकि जैसे ही आप पैटर्न देखते हैं, ह्यूमन माइंड पैटर्न देखता है, तो बिकॉज ऑफ इट्स innate quality that we call inquisitiveness or the curiosity, so always human brain start raising certain questions about those problems or that observation, repeatable observation. कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. So this is the next stage of the scientific methodology that we call the stage of question framing. So far whatever we have discussed, if anybody would like to again add anything, or if he or she wants to clarify something, so you again, questions are welcome. If there is no question, then we can proceed further. Yes. Okay, I am presuming that there is no query so far. So the next stage is the stage of the question framing. And as I said, that once you have made observations accurately, minutely, then automatically in your brain, in our brain, or in the brain of a common human being, always some questions will be generating. So the art of generating, art of raising these questions is very, very important in the scientific methodology. So always
encourage your students to raise questions. जनरली हम लोगों में टेंडेंसी होती है कुछ आगे खासतौर पे टीचर्स में कि वो बच्चों के अंदर जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, इंक्विजिटिवनेस होती है, उसको दबाते हैं कि नहीं आप कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बाद में पढ़ना। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ के क्लास में आप डिस्टर्बेंस करते हो। सो नेवर रेजिस्ट दैट अर्ज टू रेज क्वेश्चंस, इवन प्रमोट दिस एक्टिविटी। बच्चों से कोशिश कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन पूछ सके। ओनली थिंग इज समटाइम्स के दे मे आस्क सम hypothetical questions or those irrelevant questions, so you may give solution to those questions also, that this is again not related to this, but let's again you search this answer for this question, or this is not the time at this moment, but we will again try to answer this question later on after this class in this way. But never again rebuke, never again criticize your students for asking questions. कोई सा भी हैफेजर्ड क्वेश्चन भी यदि बच्चा यदि टॉपिक से रिलेटेड पूछता है या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछता है, सो ऑलवेज एनकरेज हिम और हर, अपने स्टूडेंट को हमेशा एनकरेज करिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परामेंट इन योर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले उनमें ऑब्जर्वेशन का स्किल डेवलप कराने की कोशिश कीजिए, ट्रेन कीजिए, और जब ऑब्जर्वेशन का स्किल डेवलप हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन रेज करेंगे। जैसे कि आपने अपनी क्लास में भी देखा, यदि बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहा है, इफ स्टूडेंट इज हाईली रिसेप्टिव, जब आप लेक्चर दे रहे हैं या अपने बच्चे को कोई सब टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चे ने यदि उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, समझा है आपसे, सो ही विल ऑलवेज आस्क सम क्वेश्चन। If some doubt is there, he will raise or she will raise. यदि बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा एंड बच्चा जो है आपकी क्लास में केवल फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली नहीं है, तो he will not raise question. तो यदि आपकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है, बच्चों ने कुछ नहीं पूछा, तो वैसे तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये लीजिए कि बच्चों ने 100% समझ लिया, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। आप ये समझिए कि बच्चों ने कुछ नहीं समझा यदि आपकी क्लास में किसी ने एक भी क्वेश्चन रेज नहीं किया। सो दिस इज द लिटमस टेस्ट फॉर यू। यदि बच्चे आपकी क्लास में क्वेश्चंस रेज करते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, इट इज अ गुड साइंस, इट इज अ गुड साइन ऑफ योर टीचिंग मेथोडोलॉजी। दे हैव ट्रस्ट इन योर टीचिंग मेथोडोलॉजी. They like your teaching style. If they are not raising any question, it means they are not attached to you. They are not taking interest in your teaching methodology or your teaching style. So this is a very basic parameter of checking whether I am teaching my students in a better way or in a correct way, or the process of teaching is right or not. This is very, very good, or the very, again, good criteria. So always promote your students to raise questions, because this ultimately leads to the development of this scientific methodology or the scientific temperament. So as far as the science is concerned, again, after observation, this framing of the question is again very, very important again step, and this is the next step of the observation. And as a part of the question framing, again, we ask to ourselves a question or a set of questions related to the observations we have made. मान लीजिए आपने कोई चीज को ऑब्जर्व किया, मान लीजिए आपने सूरज को सुबह उगते हुए देखा, तो जब हम ये देखते हैं कि सूरज हमेशा ईस्ट में उगता है, तो ऑटोमेटिकली हमने देखा कि सूरज जब हम सुबह उठते हैं तो हमेशा ईस्ट में उगता है। तो दिस इज वन ऑब्जर्वेशन, रिपीटेबिलिटी इज देयर। सो अगेन द क्वेश्चन विल बी अगेन अराइजिंग इन माय माइंड, व्हाई ओनली इन ईस्ट डायरेक्शन, व्हाई नॉट इन वेस्ट? यदि ईस्ट में उग रहा है तो क्यों उग रहा है, कैसे उग रहा है? तो these are the natural questions, and these questions
human brain is raising in order to explain, in order to generalize the repeatable observation, जिससे कि वो पूरा का पूरा जो है फिनोमिनन जो ऑब्जर्व हुआ है वो ब्रेन के किसी कोने में अच्छे ढंग से फिक्स हो सके, सेट हो सके. So in this, again, scientific temperament scale, again, this question framing is very, very important. And in science, again, because these questions are always generate as a part of the curiosity also, in common mind also, you will find always questions are raised. But in case of the science, those questions are having the relevancy which are non-ambiguous. यदि आपने क्वेश्चन जो रेज किए हैं वो वे क्वेश्चंस को रेज किया है, so you will not be reaching to any destination. तो आपको यहाँ पर इस स्टेप पे जो है जो आर्ट डेवलप करनी है वो ये डेवलप करनी है, आप बच्चे से ये कहिए जो भी क्वेश्चन आप रेज कर रहे हैं उसको क्लियर कट रेज कीजिए. और in order to make again question a clear cut, you always ask them to make at a time a single question, having only single query in that question, rather than making 2 or 3 things together. Just you ask them to raise only one question, seeking only one answer, rather than clubbing so many again questions, queries together. So in this way, ultimately, when you will be again training your students to raise a proper question, ultimately you are inculcating this scientific temperament. And as you know, in science, again, the most of the again questions are related to again very few again simple words: what, how, and why. So always you ask your students to raise the scientific questions in what form, how form, and why form. So if they will be generating, if they will be raising the questions through these words, they will be able to frame questions in right way, in better way. Clear? Any suggestion at this moment? All are enjoying. Okay, sir. So once you have raised the questions and once you have trained your again students up to this level, then comes the next stage that we call hypothesis making. Although this term is again appearing to be very, very complicated, but in real words, in actual words, this hypothesis is nothing but a probable answer to the question you have raised. So when you are giving a predictable answer to your raised question, then we call that particular stage of scientific methodology as hypothesis making. So here, ultimately, what we are doing. Now again, shifting back to the first question. Again, हम teachers के अंदर क्या होता है? हम teachers जो होते हैं, खासतौर पे कुछ teachers ने देखा होगा वो बच्चों को spoon feed करते हैं. बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा नहीं, they start giving up to date answer. पूरा का पूरा उसको ऐसे बताएंगे कि बच्चे के अंदर कोई query नहीं आ रहे. So I would say this is very, very wrong trend. सबसे पहले यदि आप बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके आना चाहते हैं, सो नेवर गिव अ डायरेक्ट आंसर टू हिम और हर. क्योंकि यदि आपने बच्चे को सेटिस्फाई कर दिया अपने आंसर, तो बच्चा कभी भी उस क्वेश्चन का अपनी तरफ से आंसर ढूंढने का कोई एफर्ट नहीं करेगा. सो इन फर्स्ट गो यू आस्क योर स्टूडेंट
try to come up with your solution, then I will answer. तो इस तरह से जब आप बच्चे को बार बार क्वेश्चन रेज करने के लिए कहेंगे, क्वेश्चन रेज किया और उसको सर्च करने के लिए कहेंगे खुद ही, तो बच्चा अपने आप को फोर्स करेगा सर्च करने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाने के लिए. हो सकता है वो क्वेश्चन सही हो या गलत हो उसका आंसर, लेकिन वो आंसर लेके आएगा. So similarly, whenever we make some observation and when we raise natural question related to that query, that observation, then our human mind or our mind always try to give the probable answer to that question. And that question or that answer is always based on the, whatever things we are observing, or the answer may be based on our previous knowledge also. तो उसके आंसर जो आएंगे वो कहीं ना कहीं जो है, या तो जब हम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कोई हमारे पास आंसर आ जाता है प्रोबेबल, कोई गैस हम लगाने लगते हैं उसके बारे में, या ये होता है कि कभी हमने उससे रिलेटेड कोई फिनोमिनल या ऑब्जर्वेशन हमने पास में देखी होगी और उसका यदि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, आंसर अवेलेबल, तो वी ट्राई टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन डिफाइनिंग द new observation also. So whenever you give a probable answer to the raised questions in this way, so we call that particular step as hypothesis making, and this hypothesis is nothing but the probable answer to your question. And because this is the first hand answer, or this is the working or the starting answer, so it is not guaranteed that whatever you have proposed, that would be the right explanation or the right answer of your question. But the important thing is about this stage is that this stage is giving you the direction. It is the point from where you start working on your problem. So that's why this hypothesis making is very, very important step again in this series of raising or developing this scientific temperament. So hypothesis is always again developed, and these hypotheses are very, very important part of the scientific temperament. तो जब आप बच्चों से कहते हैं क्वेश्चन बनाया है, तो आप खुद ही पूछिए आप क्या सोचते हैं भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, या कोई आपने ऑब्जर्वेशन या कोई आप इस तरह का फिनोमिनल देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, तो आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि भाई आप ही बताइए ना इसका क्या प्रोबेबल रीजन हो सकता है. आपने पूछा है क्यों हो रहा है, तो आप बताइए कि यदि सूरज जो है इस डायरेक्शन में उगता है तो क्यों उगता है, आप खुद ही सोचिए, बताइए क्या रीजन हो सकता है. So students will be coming up with some of the probable answers, and those answers are nothing but the starting point where from the student or a person can start working on the problem. So once you have made a probable answer, then comes the next stage, and that is the stage of the validation of your answer. And we call this particular stage as stage of experimentation. So as a part of this experimentation, what we are doing, we are just checking whether the answer we are giving or answer we are proposing, whether it is correct or not. We are just checking, we are validating the hypothesis. And whatever we are doing as a part of our exercises nowadays, we are nothing but we are focusing on only this stage. आपने ज्यादातर जितनी भी एक्सरसाइजेस कराई हैं या हम लोग भी डिस्कस करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, we are just focusing on this part of the experimentation. तो क्या हम एक्चुअल में साइंस कर रहे हैं? We are not doing science, we are not doing holistic science, but we are just training our students to just
one limited, restricted part of the broad strategy, broad again methodology that we call scientific methodology that is required for developing scientific temperament. So as a part of this experiment, what we do, we check whether the answer we are giving in the form of the hypothesis that is correct or incorrect. We try to give evidences in support or against that probable answer or hypothesis. And we are having a quite set again methodology for that also. And generally what we do, the problem or the question we have raised, we first of all focus ourselves to that particular question. And in science again, or in our day-to-day life, you will find whenever we make observations, those observations are always related to some other parameters also, some other things also. So what we do as a part of the experimentation, first of all, we focus on our relevant thing, our relevant observation. And then as a part of the experimentation, we try to remove, we try to isolate all those interfering or affecting parameters, which we call variables or affecting parameters. And this is done with the help of, again, this control. तो कंट्रोल में हम बेसिकली करते क्या है कि जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं अदर देन द वेरिएबल इन विच वी आर इंटरेस्टेड, वी ट्राई टू रिमूव और वी ट्राई टू कीप देम कांस्टेंट सो दैट आवर एक्सपेरिमेंट मे नॉट गेट अफेक्टेड. तो इसलिए ज्यादातर एक्सपेरिमेंट में आपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि हमेशा दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स रन किए जाते हैं. वन को वी कॉल कंट्रोल conditions and another is test conditions. So control conditions में हम सारे के सारे जो conditions हैं उनको constant रखते हैं और जो टेस्ट में है उसमें हम जो कंट्रोल में conditions रखी हैं सारी के सारी स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं उनको कंट्रोल जैसा रखने के बाद केवल उस वेरिएबल को चेंज करते हैं जिसमें कि हम इंटरेस्टेड है. एंड आफ्टर कंपेयरिंग the outcome of control and test, we take decision. So if the evidences are in support of our first answer we have, which we have given, that is hypothesis, so we say that our answer is right. If that question evidence is not favoring that, so again we have to again modify our hypothesis or the probable answer again, and then again we have to rework. तो इस स्टेप पे आने के बाद ये एक्सपेरिमेंटेशन और जो हाइपोथेसिस है इस वाले स्टेप पे हमें बार बार रिवर्ट बैक होना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है. आपने एक बार एक्सपेरिमेंटेशन दिया, जो आंसर दिया उसको चेक किया, यदि वो फिट नहीं बन रहा तो आप फिर से अगले अपने फिर से जंप करते हैं हाइपोथेसिस पे, फिर से नई हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर से आप फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको एविडेंस ढूंढते हैं, एविडेंस सपोर्ट नहीं करते तो फिर से उसको चेंज करते हैं. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल you get the right answer. And once you have get the right answer, then comes the next stage, and that stage is called theory making or theory. So once you are getting the supportive evidences of your probable answer or the hypothesis again and again, then we say that this is the exact answer of this particular problem. So when you are again and again reaching on the same conclusion, then that hypothesis is converted into the theory. And this theory is nothing but from the human brain functioning point of view, this is the actual generalization. Now you have generalized the thing. And in science, if you take again any discipline of the science, whether it is physics, chemistry, or biology, then you will find the number of concepts are there. And these theories or the concepts are nothing but ultimately the generalized statements which have been
created, which has been made based on the continuous again evidences. जब एक ही चीज को बार बार करते हैं, बार बार लोग करते हैं, और जब वो एक ही डिसीजन पे बार बार पहुंचते हैं, तो वी स्टार्ट सेइंग दैट दिस इज द नेचुरल फिनोमिनन और दिस इज द कॉन्सेप्चुअल और द थ्योरी पार्ट. तो अब उस पार्ट को जब आपने एक जनरलाइजेशन क्रिएट कर लिया, देन दिस जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन इज रेडी टू बी यूज्ड फॉर इट्स अदर एप्लीकेशंस. तो आप उसको जब आपने जनरेट कर लिया, नाउ यू कैन मेक यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एंड दैट इज नाउ नॉलेज. तो उससे पहले आप सारी की सारी जो चीजें थी वो आपके पास इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन को नॉलेज में क्रिएट किया, नाउ दिस नॉलेज यू कैन अप्लाई, दिस इंफॉर्मेशन यू कैन अप्लाई फॉर योर एनी अगेन पर्पस, फॉर योर ओन यूज. So in this way, again, we can create knowledge base. So these are the some of the basic steps of the scientific methodology. And if you want to inculcate a scientific temperament in your students, which is the basic requirement if you want to popularize science in your masses, in your society, then the most important thing, most important step you have to take, and that step is to make your students aware of this scientific methodology. And this scientific methodology you can again incorporate as a part of your lecture preparation. तो जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, उन लेसन प्लान्स में जो भी टॉपिक्स हैं, यदि आप उन सारे के सारे लेसन प्लान्स में इस सीरीज में यदि अपने लेसन्स को प्लान करेंगे, तो यू विल बी एबल टू जनरेट साइंटिफिक टेम्परामेंट, you will be able to inculcate the scientific again aptitude in your students. So my entire again focus in today's again discussion was on this scientific methodology. अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, because this is nothing but just the discourse where we are talking about the science and the popularization of the science. Nowadays, again, just if you see the again education sector for say maximum 5 years again onward, if you again look back to 5 years back, then from 5 years again onwards, we are nowadays talking again and again to make our education innovative and creative. What is the reason for that? Even we have changed our again NEP also, National Education Policy also, and nowadays we have made the innovation as the integral part of this policy. Can anybody tell what is the reason for this? क्या हम हजारों साल से जो मेथोडोलॉजी को हमने एडॉप्ट किया हुआ है, चली आ रही है जो एजुकेशन अगेन सिस्टम, इज देयर एनी सम फॉल्ट देयर? और क्या हमें आज की डेट में कुछ ज्यादा कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी कि वी नीड मोर क्रिएटिव पर्सन और द मोर इनोवेटिव पर्सन? क्या पहले जो साइंस इतनी डेवलप हुआ है, इतना एडवांसमेंट हुआ है, क्या उसमें क्रिएटिविटी नहीं थी? तो व्हाट इज द रीजन व्हाई पीपल आर नाउ आफ्टर दिस इनोवेशन और द क्रिएटिविटी? Sir, because till now it was, in my opinion, focused a lot on information, and now the need now is to basically get more creative solutions. Basically, information gathering is something which is a stage which is necessary. We have a lot of information, but to create new ideas, to basically create new applications, that is a very imperative thing which nowadays is there. So everything is adapting, everything is upgrading, but the education system is the same as it was many years before.
So there's a need to basically come up with a new education system which will basically enhance the learning. It'll teach the teachers and the students how to explore ideas better, how to develop critical thinking skills. Basically, application is more important than just memorizing facts. And the NEP, I think, is trying to basically move in the direction where children not only learn the concepts, but they learn the applications in real life. They learn creativity. So I guess that is the point. Yes. Anybody else? Any other view? So, Dr. Chatterjee, you have rightly said. So, if you take into consideration the entire process of the knowledge creation, then you will find the creation of the information is having the lowermost stage in this, and again in the education pyramid or the knowledge pyramid. It is lying at the base. And nowadays, you will see, because of the advancement in the technology, nowadays, the day by day, the process or the stage or the step or the process of the information creation is getting automated. Now, we humans are not focusing on the information creation. We are having the facilities, we are having the infrastructure, we are having the technical assistance is there. And because of this advancement in the technology, now the stage or the step of the information creation is day by day, it is becoming automatic. अब आपको यदि किसी ऑर्गेनिज्म का यदि जीनोम को सीक्वेंस करना है, तो उसको आपको लैब में बैठने के लिए सालों बैठने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है. जस्ट यू आइसोलेट द डीएनए, व्हिच यू कैन डू थ्रू ऑटोमेशन. ऑटोमेटिक मशीन्स आर अवेलेबल, आपके पास डिवाइसेस अवेलेबल है, एंड विद इन से 1 hour or say in 24 hours or in a day or 2 days, you will be having the entire genome sequence. So the stage or the step of the information creation, that is the very basic requirement of any knowledge creation, that step has been now overtaken by our machines. तो पहले जो काम जो ह्यूमंस को करना पड़ता था, इंसान को करना पड़ता था, वो सारा का सारा काम अब मशीन ले रही है. तो इसके कारण हमें अब नेक्स्ट स्टेज पे फोकस करने की जरूरत पड़ गई है. And that's why nowadays our educators, those stakeholders of the society, they are feeling that if you want to make further advancement, if you want to have proper development of the society, then you need to develop the skill of using that information, so that you can apply the knowledge for the betterment of the society. So that's why nowadays in each country, every country, you will find focus on this innovation, because this is the only tool through which the whatever information we are getting, that can be implemented for our betterment. So all these things I wanted to share with you as a part of this. So this is all about the methodology or the workshop, the topic which I was focusing today. Now, as a part of this exercise, again reverting back to the laboratory activity. So I have given you the background information about the activity. So soon I would be winding up this. So what you can do as a part of this activity, you can run this activity in your class, and again you can complete or you can design this activity through whatever topics you
would be teaching to your students in the form of a small participative again form, and you can introduce again any topic. तो मान लीजिए आप बायोलॉजी का कोई टॉपिक बता रहे हैं, मान लीजिए आप डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं जो आपके लेवल पे है, तो आप उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बता दीजिए, और उस प्रॉब्लम को आप सबसे पहले कोई कॉन्सेप्ट देने की बजाय, कोई चीज बताने की बजाय, उसका जो मेन अगेन कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने के बजाय आप सीधा बच्चों को मोटिवेट कीजिए ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, कि आप ऑब्जर्व कीजिए चीजों। And this you can do in the form of the group exercise. यदि आपकी क्लास का जो साइज है वो छोटा है, तो you can do that in again individual, again students one-to-one basis also. So depending upon the situation requirement, you can again do modification. So सबसे पहले आप अपनी क्लास को उस रिलेटेड उस प्रॉब्लम पे सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए, उसी तरह से ग्रुपिंग बना सकते हैं, या इंडिविजुअल यदि आप रखना चाहते हैं इंडिविजुअल रख लीजिए। एंड देन आप जो अपना जो प्रॉब्लम है, जो आप कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहे हैं, उसको बच्चों के बीच में इंट्रोड्यूस कीजिए, कॉन्सेप्ट को नहीं, केवल ऑब्जर्वेशंस को। और जब ऑब्जर्वेशंस को आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आप बच्चों को उन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम दीजिए, and then motivate them to come up with some of the observations. तो यहाँ पर आपको फैसिलिटेटर की तरह वर्क करना है, ना कि गाइड करना है कि आप ये देखिए। आप जब उनको फैसिलिटेट कीजिए, हेल्प कीजिए टू रीच ऑन द थिंग्स ऑन विच you are focusing. तो उनको आप डायरेक्ट कीजिए, बट इनडायरेक्ट वे। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो बच्चे students will come up with again some of the observations, and when you will be getting that this is the desired thing in which you are interested, then you motivate them to give the solutions for those observations in the form of raising questions. Then you ask them to raise same questions. What are the reasons for this type of observation you have make out? So in this way you can again inculcate scientific temperament. So this is the again whole exercise, and just to again share with you, I developed this exercise as a part of one of the again government again initiative of the DBT, that is they always again conduct an exercise that we call, a program is there that we call Inspire program. So all those again students who are creative, or those are again we call them as gifted child, for those again I made this exercise. So if you wish, I can share with this again entire file with you, and at the end of this again I have given again some of the problems. And one such problem is, that is the again here I have given, because of limitation of the again facilities, what you can do, if you are not able to expose, again you are not able to again introduce observations in the realistic or the realistic again world, so you can raise again the same problem in the limited, whatever limitations or limited again things are available to. For example, here in this again I have given one situation in the form of one description, and if you go through this description, then you will find that this description is again and again giving some hint to the student in the form of the observation. For example, Earth has living organisms which are visible to human eyes and differ in shape, size and structure. So this is one statement related to the observation. तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को यदि आपको इस टॉपिक के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में बताना है कि डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, लिविंग मैटर होता है, तो आप उनको यदि आपके स्कूल के कैंपस में आप उनको ले जाइए, यदि वहाँ पे कोई गार्डन है या
कोई और चीज अवेलेबल है आसपास, यदि फार्म्स हैं, कुछ भी अवेलेबल है, तो आप बच्चों को वहां पर ले जाइए और वहां पर आप बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए कहिए. देन यू विल बी एबल टू सी अगेन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, कि वहां पर स्टूडेंट्स डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करेंगे एंड दे वुड बी वेरिंग इन द शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर. So the next statement is in relation to the size. Now we are again directing, facilitating the student to reach on a particular or take one particular direction. Now instead of talking about the variation or the different living organisms, now we are focusing on the size of the organism. So some of the organisms like trees, elephants and whale are very large in size, and some like mosses and are very small in size. So here our observation is related to the size, means always you will find whatever living organisms are there, those living organisms always have variety with respect to size. They have variable sizes. So in this way you can give some of the situations to your students, either through visual aids or through actual aids or the actual conditions, or through virtual also you can create. So whatever things are possible, whatever again things are available to, whatever again aids are available to, so in that way you can create again a situation, and then you can ask your students to observe, to make observations in those again related to those again given situations. So once they have again find out the observations, then you can again ask them to come up with the solutions, first of all by raising the questions, and when they have come up with the different solution, then as a part of again now taking the role of the facilitator and taking the role of the again teacher or a leader of the class, then you can, taking into consideration all the views, all the what are the drawbacks, what are the limitations of your class, then you can reach on the some common point, and then you can devise again an exercise, and in that way ultimately you can frame an experiment. So in this way, if you will be proceeding, if you will be designing some exercise, so that exercise would be more inclusive, more participative. Students, because now they will be having their own control, so they will be enjoying this activity more, they will be learning more, and ultimately you are giving them, you are empowering them to take decisions, their own decisions, and in this way ultimately they will be learning in better way. And you will be soon notice that they have become, again they have developed more rational and logical thinking, and this will ultimately lead to the again in the skill that we call scientific temperament. So you can make this strategy. This is one of the strategies I am telling you. This is not the only strategy, but this is just simply a suggestion to all of you. So in this way you can also apply your creativity, you can also apply your again suggestions or whatever again options or the things you feel that could fit to my class, and in this way ultimately you will come up with the some of the solutions, and with again different groups of the students, different classes, again you will be again come up with some of the again different types of strategies. So one strategy may apply to one class, so another strategy may apply to another class. So in this way ultimately your teaching style, your style of the again this education or the teaching methodology, that would become more beneficial from the student's point of view. So this I wanted to share with you today because of the again, as Dr. Kakru suggested, to wind up this again as soon as possible. So although I have taken again more than requisite time, so forgive me for that. Hey, But if you have anything more to add, you can please add. Everybody is there. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, इंटरेक्ट कीजिए प्लीज.
किसी का कोई क्वेरी है, कोई और चीज क्लियरिटी चाहते हैं तो काइंडली पूछिए। अदरवाइज एज ए होमवर्क मैं चाहूंगा कि जो कोई भी वॉलंटियरली एक दो ऐसे कुछ टॉपिक सजेस्ट करें कि भाई हम अपनी क्लासरूम में ये करवाना चाहेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी द बेटर आउटकम ऑफ दिस होल एक्सरसाइज। फीडबैक लिंक है, फीडबैक भी बता दीजिए, लेकिन मोर देन दैट डॉक्टर साहब ने कल भी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे जोर दिया, आज भी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे जोर दिया, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत सी क्वेरीज भी जो अपने दिमाग में रहते हैं कि हमारे पास ये चीजें, बच्चों को कैसे हम इन्वॉल्व करें, वो भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो आई वुड लाइक कि जब भी आपके क्लासरूम्स में हैं तो आप कुछ अपने लिए डिजाइन कीजिए कि जी हाँ जी ये मेथोडोलॉजी या ये एक्सपेरिमेंट हम इसको क्लासरूम में डिजाइन करना चाहेंगे। तो प्रोबेबली दैट विल बी, मेरे हिसाब से वही सबसे ज्यादा आउटपुट हमें इस ट्रेनिंग का मिलेगा जो हम लोग पिछले 3 दिन से करवा रहे हैं। माइक्रोस्कोप का यूज भी कल आप लोगों ने बताया कि हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो दिनेश जी ने बताया कि उसको भी आप कैसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली फोकस इज कि बच्चे को हम साइंस की तरफ कैसे इंटरेस्टेड बनाए, कैसे उसका टेम्परामेंट क्रिएट करें और कैसे वो साइंस को परस्यू करने की एक उसको सुजल मतलब बिल्कुल इजी तरीके से कैसे उसको हम पढ़ाने की कोशिश करें। तो किसी टीचर का अपना कोई मतलब सजेशन है तो काइंडली बता दीजिए, उसके बाद मैं, मोनिका भी हमारे साथ बैठी है, उनसे बोलूंगा कि ये वाइंड अप करें। तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हियर कपल ऑफ टीचर्स जो भी अपना कुछ सजेशंस वगैरह इस वर्कशॉप, 3 दिन के वर्कशॉप में जिसने तीनों दिन अटेंड किया है, तो वो हमें वर्कशॉप के बारे में थोड़ी कुछ बातें बताएं, ताकि आगे की वर्कशॉप्स में हम इस चीज को ध्यान में रखें कि ये चीज फोकस में ज्यादा रहनी चाहिए वर्सेस द अदर थिंग्स। लता जी हमारे साथ हैं, वो पिछले 3 दिन से हमारे साथ ही रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि लता जी आप कुछ अपनी बातें रखें इस पे। थैंक यू सर। मैं इससे पहले ओरिगेमी वर्कशॉप में भी जुड़ी हुई थी आपके साथ, और अब साइंस वर्कशॉप में भी जुड़ी रही हूँ 3 दिन लगातार। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है जो भी आपके ये सेमिनार्स हो रहे हैं। इसमें बस एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे बेसिक के शिक्षकों को आप लोगों ने जोड़ा हुआ है सर, तो थोड़ा सा जो उनके कंटेंट से रिलेटेड टॉपिक्स भी इंक्लूड करें इसमें, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा और इंटरेस्ट आए और अपनी क्लास में ज़्यादा अप्लाई कर सकें इसको। सर ने जैसा हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी पे 2 दिन बात की है, वो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल है, और मुझे लगता है कि जब सभी टीचर्स अपने क्लासरूम में इसको अप्लाई करेंगे तो और बेटर रिजल्ट्स जो है वो आएंगे, हमारे बच्चे और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही है ये पूरी सेमिनार हम लोगों के लिए। और थैंक यू फॉर काकरू सर एंड जो सर जितने भी इसमें हम लोगों को मेंटर्स ने गाइड किया आकर के, उन्होंने हमें एक अच्छा मतलब प्रोसीजर अपनाने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हम सभी को कि किस तरह से हम अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और किसी का कोई अपना सजेशन हो तो काइंडली बता दीजिए। नमस्कार सर, मैं ओजस्विनी कौशिक, लोनी गाजियाबाद से। मैं भी बिल्कुल यही बात कहना चाह रही थी जो लता मैम ने कह दी कि 3 दिन की सेमिनार बहुत अच्छी थी। हमने 3 दिन का ये वर्कशॉप अटेंड किया, और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो एमएससी में, जो बीएससी में हम लोगों ने पढ़ा था, इतने सालों बाद थोड़ा रिवाइज हुआ वो सब चीजें। और बस वर्कशॉप हमारे लिए बहुत अच्छी थी। और वही चीज मैं भी कहना चाहूंगी जो लता मैम ने कही कि एक तो ये कि थोड़ा सा हमारा जो बेसिक एजुकेशन के बच्चे हैं, थोड़ा सा एक सेमिनार ऐसी, एक वर्कशॉप ऐसी हो जो उन बच्चों के टॉपिक से रिलेटेड हो। और एक चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगी कि जब ये हमारा कोविड का पूरा समय खत्म हो जाए और चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएं,
तो कभी कोई ऐसा एक मौका हमारे बेसिक के बच्चों को दिया जाए कि उनको प्लेनेटोरियम है या साइंस म्यूजियम है या कुछ आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे बच्चों को भी सामने से देखने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, मतलब ऑफलाइन वो लोग सीखें। हम तो सीखे ही टीचर्स भी, लेकिन हमारे साथ हमारे बच्चे भी देखें डायरेक्ट कि क्या चीजें हैं। तो मैं ये ऐड करना चाहूंगी, तो वो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों को सामने से सीखने का मौका थोड़ा कम मिलता है। आपने हमें बताया, हम उन्हें बताएंगे, ये तो मेथड चलता ही है, लेकिन वो डायरेक्ट आके उन चीजों को देखें तो इट विल बी बेटर। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। बाकी आप सब लोगों को सर थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छी वर्कशॉप रही। आपको मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि जहां तक प्लेनेटोरियम का सवाल है, तो ऑफलाइन जब भी हो, हमारे पास एक मोबाइल प्लेनेटोरियम है, वो आपके स्कूल में आके बच्चों सर को दिखा देंगे। तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं तो बहुत अच्छी, आपने मेरे मन की बात बिल्कुल कह दी सर। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है। जो भी डेट आप कोई हमें 1 या 2 डेट्स बता देना जी, इस दिन हम चाहते हैं, इतने बच्चे हमारे पास हैं, तो अकॉर्डिंगली हम अपने स्टाफ को भेज के आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे? आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? मेरा कोई फोन नंबर, आप मेरा फोन नंबर तो इस पे है ही है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप तो हो उस पे। जी जी जी, तो उससे तो मेरे को, डायरेक्ट आपसे ही कांटेक्ट करें। हाँ जी हाँ जी, वो और हमारे उसके पास, लिए सर हमारी स्कूल संस्था में के आपको, पास ही है। जी जी, और तो सर स्कूल में उसके लिए आपको क्या चीज, क्या इक्विपमेंट्स को चाहिए होंगे? स्कूल में हमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए और एक छोटा सा हॉल चाहिए, क्योंकि वो 12 फीट ऊंचाई उसकी, मतलब फुलाना पड़ता है उसको। ओके। तो वो 12 जो क्लासरूम है वो खाली होना चाहिए, वो नीचे ही हमें जमीन पे रखना पड़ता है। सर आपने ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात यहाँ पर बताई है, और मुझे लगता है हम सब जितने टीचर्स यहाँ पर हैं, सब ही इसको जो आप ये बता रहे हैं इसको अवेल करना चाहेंगे बिल्कुल। सो सर थैंक यू सो वेरी मच। वो हम करेंगे। उसमें एक टाइम में हम लोग 20 से 25 बच्चों को दिखा सकते हैं, और 15 से 20 मिनट का ये शो रहता है, जिसमें पूरा आपको ये तो मतलब ऐसी बात हो गई सर, जैसे बिल्कुल आपने मेरे मन की बात एक यहाँ पर रख दी है। नहीं। तो सर थैंक यू सो वेरी मच। और इसमें कोई शुल्क भी नहीं है। बिल्कुल जैस्मी मैम, ये मन की बात नहीं है, तो सबके मन की बात कर दी सर ने। बिल्कुल किरण मैम, मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं ओजस्विनी मैडम ने, सबके मन की बात कही है, और हम सभी लोग अपने स्कूल में इनवाइट करना चाहेंगे सर को। स्कूल में अगर पॉसिबल ना हो, बहुत अच्छी बात कही सर। और मतलब वाकई आप, हमें ऐसा लग रहा है कि लास्ट डे का ये जो टाइम है ये बिल्कुल सार्थक हो गया। ये वर्कशॉप खत्म होते होते हम लोगों के एक इच्छा को पूरा कर गई। थैंक यू सर। नहीं, अभी हम एक बार और जिसको इंटरेस्टेड है उसके साथ मिलेंगे 14 तारीख को वैदिक मैथ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद हमारे लिए मतलब काम करने का जितने भी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू। मैं वैदिक मैथ में भी हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि और जुड़ो। तो और किसी का कुछ है तो, अदरवाइज मैं डॉक्टर मोनिका कोल को बोलूंगा कि इस अपने शब्दों के साथ इस वर्कशॉप को समाप्त करें। सर थैंक यू वेरी मच इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, और आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे, और हमारे सारे बच्चे खुश होंगे वो देखकर, और हम उससे ज्यादा उत्साहित हैं इसके लिए। बिल्कुल, आप हमें डेट भेज देना। हर एक स्कूल 2-2 डेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएगा, क्योंकि तब जाके हमें प्रोग्राम करने में पता चलेगा कि कितने घंटे हमें देने हैं या कितने दिन देने हैं एक स्कूल में। डेफिनेटली सर। ठीक है। सर कंपोजिट विद्यालय सुठारी में भी आना है। जहाँ मैंने ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये प्राइमरी स्कूल है या ये कोई भी स्कूल हम बता रहे हैं। सर अब आपने हम लोगों के हाथ में एक ऐसी चीज दे दी कि अब आपको गाजियाबाद के हर एक स्कूल में जाना पड़ेगा। राइट सर व्हाट्सएप ग्रुप आप डिलीट ना करें, उस पे हम बता देंगे। हाँ, ये ग्रुप डिलीट नहीं होना चाहिए, तभी हम सब संपर्क में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नहीं, ये ग्रुप हम डिलीट नहीं करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी मोनिका जी, प्लीज क्लोज कीजिए। थैंक यू। Thank you so much, sir. I wish to thank each one of the participants who attended this workshop. हमने कोशिश करी, और अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू। आई थिंक कि आज की वर्कशॉप में देयर वाज लॉट टू लर्न। मैंने खुद पूरा टाइम अटेंड करी, बिकॉज कंटेंट हमको क्या पढ़ाना है, किस लेवल का पढ़ाना है, वो हम खुद डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कैसे पढ़ाना है इज वेरी इंपॉर्टेंट।
So from the day one, हम में से किसी का ये focus नहीं था कि क्या पढ़ाना है. We tried to, tell you how can we make our classes better with whatever material is available. We don't need बहुत sophisticated instrumentation or material to teach science. We can do very small experiments, non-invasive, low-cost experiments. So, right from day one, I talked about pollen. Kitna sara pollen available hai. You don't have to buy it from anywhere. Nature provides you with that. You just need a slide, a small microscope. I told you that there are 4 scopes which are available. And they're very, they cost around 500 to 700 rupees, a basic fold scope. So, instrumentation is never a limitation for teaching science. Now, again, going back to the observations, अगर आपको याद हो मैंने भी बताया था कि डार्विन ने कोई experiments नहीं किए. Just on the basis of the observations, he could propose profound theories in science. So that is what Ishwar sir was again emphasizing, that in classrooms, most of us try to focus on one single thing, but teaching science follows a methodology. There's a method of doing science. There's a method of teaching science as well. So most often while teaching, we forget the method of teaching science. It is as important to deliver the content as telling the story behind the content. तो बच्चों को अगर साइंस पढ़ाना है तो थोड़ी बहुत स्टोरी टेलिंग, थोड़ी बहुत scientific observations, फिर experimentation, फिर logical thinking, analyzing your observations. हर एक process है. It is a stepwise process. So at times क्या होता है, हम लोग जिस चीज में अच्छे होते हैं हम उसी चीज को emphasize करते हैं. अगर हम में से किसी टीचर को एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है तो he will only try to incorporate the experimentation aspect in the classroom. अगर किसी को observations अच्छी लगती है तो he will put observations at the forefront and experiment at the back end. That should not be the way we teach science. We need to integrate all these things. तो यही focus था कि science पढ़ाने के लिए हमें एक proper methodology, एक scientific methodology, एक thought process कैसा होना चाहिए, हम कैसे students की inquisitiveness को promote कर सकते हैं, हम कैसे बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं पूरे time classroom में. क्योंकि ऐसा होता ही है कि we lose our students in between the classroom. It may start up with a lot of enthusiasm, but it fades out gradually as we go along the content. तो content के साथ साथ interest जगाए रखना is also important. And science is not Hindi, science is not literature, science is not English. There needs to be a proper method of instructions. तो content कुछ भी हो, as you just emphasized कि हमें हमारे content को पढ़ाया जाए. तो of course that is okay. But at the same time, content can be read from anywhere. But using a practice is something important. We have to practice on our teaching methodologies. So, and also emphasize every time that it is not important to have a big lab for teaching science. Your thoughts, your own mind, and how you can, create interest from small do-it-yourself activities. That is as important as the content. So next time probably Dr. Kakru can take some other workshop where he can focus on the few experiments from your content. But I feel from my personal experience after attending some of the sessions here that a leaf peel, just a peeling of a leaf can help you do some experiments. Pollen can help you do experiments, and how you can follow a scientific process using even normal microscopes which are generally available in most of the labs. So that's how you can carry forward this journey of life sciences teaching. That's what I wanted to say. I thank each one of you, and I thank some of the participants who were really interactive.
and they made this session very interesting and so engaging. And I wish to thank all my speakers, all our resource persons who joined us, Dr. Romila Rawat, Dr. Dinesh Gautam, and Dr. Ishwar sir, who have made this entire program very interesting. Thank you, Dr. Kakru, for deciding to take up initiatives like this. I guess we need to reach out to the teachers in the schools. I'll again reiterate that your output is our input. So if we are investing in you, we are also investing in producing good students who can come to good colleges. So with these words, I also want to thank NSCST, DST, Government of India for supporting this initiative. And I wish you all the best for your teaching endeavors. Thank you everyone for joining us. Thank you, Monica. Thank you, everyone. So we take a leave. Thank you.